So we'll just open for a quick Q&A session, if I can have everyone on stage. Bipasha, what's up? Bhushanji. Just imagine the creature sitting here. You can ask the questions. So any questions? We are good. Oh, someone wants a mic. Okay. Just shout it out. Yeah, go ahead. Honestly, ma'am, in all honesty, no. I don't know what it is. It's some kind of connect. For me, everybody keeps on asking me why would I want to choose a horror film. I've been asked this question by very close, near and dear people also. But for me, ma'am, I have to really be honest. I rather do genre is not so important. What you do in a film, what storytelling happens, the way you entertain the audiences is the final thing, what I am looking for. So in a film like this, where I have a fantastic role, then why not? That's the reason why that's the reason how I choose my films. But I am still very scared. I am scared all the time. Nothing has changed. बिपाशा अगर आपको श्वेता एबीपी न्यूज़ से आपके ठीक सामने आपके लेफ्ट या इस क्रीचर आपको अगर हॉरर क्वीन कहा जाए तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आप लोग कुछ भी कह लो, मेरी पिक्चर देख लो बस. Horror queen, scream queen, just call me anything. The truth is that I have done a lot of supernatural films and all kinds of films with the element of fear. Or Creature is a creature film. It's different from ghosts and spirits and the supernatural, but still the element of fear is very eminent. So yeah, you call me anything. Fear goddess, just give me any new name. I'm happy. और एक और बात आपसे जानना चाहूंगा कि इस फिल्म में भी एक सबसे जाना पहचाना चेहरा और आप ही हैं, और इसके अलावा भी जो आपकी आने वाली फिल्म भी है एलोन, उसमें भी टेलीविजन के बहुत सारे सितारे काम इसमें, और आगे एलोन में करण सिंह ग्रोवर के साथ आप हैं. तो कितना कैसा कंफर्ट रहता है आप जब टेलीविजन के एक्टर आपके साथ काम कर रहे हो? देखिए, एक्टर होते हैं. इट्स सो इट्स नथिंग रियली डिफरेंट. डेफिनेटली उनकी पहली फिल्म है, तो but the medium is same. We are all entertainers. We are all doing different kinds of entertaining, like on the TV or in films. So ज़्यादा कुछ उतना different नहीं होता है. बट विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आप हॉरर छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं क्रिएचर फिल्म में, लेकिन डरा तो आप यहाँ भी रहे हैं, चाहे क्रिएचर के थ्रू डराएं या भूत के थ्रू डराएं. एक्चुअली बात डर की नहीं है, बात थ्रिल्स की है. डर हम लोग समझते हैं कि थ्रिल होना भी डरना ही है. जैसे ये सारी फिल्में वर्ल्ड ओवर, ये सारी यूए फिल्म्स होती हैं, दे आर नॉट हॉरिफाइंग, दे आर थ्रिलिंग. और इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है. जैसे हम लोग किसी मर्डर मिस्ट्री को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा. ये बात से हम लोग डरते नहीं हैं, लेकिन टेंस होते हैं. सो दीज आर टेंशन फिल्ड फिल्म्स, सो दे आर नॉट हॉरिफाइंग फिल्म्स दैट वे. Mortal or immortal? It's a very good question. It's a very, very clever question, which kind of asks me what the creature is. But let's say that the creature is almost 500 years old. And nobody and nothing has been able to kill him now, till now. So till now he's been immortal. Let's see if he stays that way. Well, this is my fifth, I think, film after fourth, after Raz and Haunted and Dangerous Ish. So I'm finding
myself more at home with 3D than in 2D. As a matter of fact, if I visit a colleague's set and if they're shooting in 2D, मुझे लगता है कुछ problem है. क्यों ऐसा लग रहा है कि यहीं पे खत्म हो रही है frame? So I'm now very comfortable. नहीं ऐसा मैंने कब कहा? आप बांधिए मत मुझे. हेलो विपाशा, मेरा क्वेश्चन आपसे है. आप अक्सर ये बात कहते हैं कि फिल्म करने के बाद, हॉरर फिल्म करने के बाद आप उस डर को महसूस करती हैं, लेकिन शूट के दौरान कितना लोग आपको प्रैंक करते हैं ऑन शूट पे, कितना डराते हैं? देखिए, ये फिल्म कुछ अनोखी थी मेरे लिए, क्योंकि सेट पे एक्चुअली मेरे अलावा और कोई था ही नहीं, मीन्स बिसाइड्स द अदर पीपल इन द होटल. बट जो मेरा मेन को स्टार क्रीचर, हमें तो हमेशा इमेजिनेशन is a big tool in this film. We had to imagine everything. And I really have to say, विक्रम ने बहुत हेल्प किया. लेकिन प्रैंक्स जो आप कह रहे हैं, वो है बहुत सारे प्रैंकस्टर्स. मुझे डराना कोई बड़ी बात नहीं है. तो छोटी सी बात है, और जो डराना चाहते हैं वो डरा लेते हैं. Bipasha here, hi. There have been reports of Harman is doing a cameo in the film. No. Hello, Bipasha. Yeah. Hello, Bipasha. This is Raj here. I'd like to ask you that why do you think that audience should go and watch this movie? Why? Yeah. Because they should. Bipasha? It's a different film. It's a step forward. You need to be encouraging. You cannot be given the same thing again and again. You know, year after year. You have to try new things. You'll get bored. You know, it's not great to be monotonous. Have a little spice in your life and go and see something new. Okay, Bipasha here. Okay, I would just like to ask कि आपको मल्टी स्टारर फिल्में करना ज़्यादा पसंद है या फिर ऐसी फिल्में जिसमें आप अकेले ही सारा रोल चुरा लेती हैं, मतलब अकेले जिसमें चुरा लेती हूँ मैं रोल. Means you're the main lead of the film. I'm very bad. देखिए, मैं क्रीचर का रोल नहीं चुरा पाई इस फिल्म में. I tried. I told Vikram, can I play the creature? But no, it's nothing like that, ma'am. I've done a lot of multi-starrer films over these years, and I've always enjoyed the process of both. So it's equally, you know, it's as long as the idea is when you do a film, you have to connect with the film, you have to live with the experience of the film, and you have to enjoy it. When it's not enjoyable, it's very rare that it's not enjoyable, but sad when it's not enjoyable. I have nothing to say to that. Absolutely. As I just told, when I saw the creature, first creature जब इन्होंने मुझे दिखाया था, तो I was very very satisfied. मेरा सवाल बिपाशा से है. बिपाशा आपके लेफ्ट में, आलोक है फ्रॉम OFM. देख लीजिए हाथ यहाँ. सवाल ये है कि लास्ट फिल्म में आपने बोला था कि एक वर्ड यूज किया था आपने, फट्टू. मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ एंड मुझे बहुत लगता है, एंड जब शूटिंग के बाद घर जाती हूँ तो भी दोस्तों को बुला लेती थी, डर लगता था वगैरह. स्टिल इस शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसा ही था? देखिए, हम लोग ऊटी में शूट कर रहे थे, तो ऊटी का यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बट लुक्स क्वाइट स्कैरी इन द नाइट्स, और मैं तो ऐसे ही डरती हूँ, तो हाँ, मुझे वहाँ पे भी डर लगता था. एंड इट्स नथिंग न्यू, यू नो दिस. राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम विक्रम ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, राज, और मैं मुकेश जी के ऑफिस में चेयर से उल्टा गिरी थी. वो तब से लेके आज तक वो ट्रेडिशन चल रहा है. मैं बहुत डरती हूँ. कुछ रातों का वाकया अगर आप शेयर करना चाहें, कभी डर लगा हो ऊटी की शूटिंग के दौरान? हम लोग एक्चुअली बहुत थक जाते थे शूटिंग में. मैं सबसे पहले जाके सो जाती थी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज करती थी बिफोर कमिंग टू सेट. सो एक्चुअली दिस फिल्म केप्ट मी वेरी बिजी. मैं उतना डरी नहीं हूँ ऑन स्केड्यूल. एंड क्रीचर जो दिखता नहीं था, उसके सामने एक्ट करने का अगर कुछ एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? बहुत मुश्किल था. आई थिंक इसलिए मैंने कहा विक्रम की गाइडेंस बहुत जरूरी थी इस फिल्म में, बिकॉज इट वाज समथिंग दैट आई कुड नॉट डू. एंड हर शॉट को हम ऑलमोस्ट 3 बार करते थे, बिकॉज ऑफ all the measurements and for the cameras and all the technical things. You can ask Vikram about it. So it was quite an exhausting film for everybody, because everybody worked really hard.
and none of us knew what's going to finally come of it. कि क्या बनेगा creature, कैसे बनेगा, हम लोग ठीक तरह से react कर रहे हैं कि नहीं. So it was a interesting experience. I've not done a film like this before, and I'm glad I got the chance to do so. विक्रम, भूतों से आपने डराया, अभी क्रीचर से डराएंगे. कभी आने वाले दिनों में इंसान को क्रीचर बनाने की कोशिश करेंगे? हम तो हैं ही क्रीचर्स. जानवर इंसान मिक्स टाइप्स. नहीं, अब हाँ, कुछ लोग तो ये समझते थे कि कोई एक शख्स आके मुझे कहा, मुझे तो पता है स्टोरी, वो क्या है कि हर अमावस को ना बिपाशा क्रीचर बन जाती है. ये कर लो बात. विक्रम, yes, please go ahead. So, first of all, I think today, at the risk of sounding a little arrogant, we are all gathered here today to see something that has never been done in India before. For the first time, without any Hollywood studios' help, for the first time, without any foreigner coming here, we have indigenously created a CGI creature, lifelike, in 3D, and given the scares and the chills and the thrills. It has never happened before. So, before I move on to more genres, let me at least enjoy this genre, because this is something that has just come about. And 3D is about thrills and chills. Why would you want to watch a comedy in 3D? It doesn't make sense, Yeah, well, it's coming. There's another film coming very soon, and that's a different genre, but this is not the platform to talk about that. Vikram, a question to you. This is Sakhi on your left-hand side. Sakhi from Headlines Today and Aaj Tak. Right. Vikram, what is that main reason that you keep repeating Bipasha? You've made her star from Raz, it went on, and now it's Creature. So what is that main reason why you keep starring Bipasha in all of these scary films of yours? Because she has beliefs in my crazy schemes, but nobody else has. Yeah, absolutely. I went to her and said, Bipasha, I want to make a Creature film. She said, wow, let's do it. I was like, you don't want to know more? She said, no. So that's why, because, I'm always trying to do something different, and when you're doing something different, you need a producer like Bhushan Kumar, you need an actor like Bipasha who's just willing to trust your dream, your aspiration. One question to you, Bipasha. There's been so much of talk of young actors giving a run, giving all the senior actors a run for their money. What do you think about that? What do you think about the 100 Crore Club and so many young actors taking the forefront? You're not a senior actor, but you belong to, to a sort of a generation which they've sort of crossed now. What do you have to say about it for having been in the industry for so long? Well, if the industry is prospering for whoever, it's a great thing. So there's going to be talent that's going to be coming in year after year. We all came in at some point, so they have to be welcomed, liked, and loved. And definitely, it's a great thing. There's nothing to sit and discuss. It's just anything that's positive, that's bringing some good to the business of filmmaking. It's fantastic. Vikram, one question for you, again from me. There's a very peculiar looking Panditji sitting here with, malas and with him. Is he related to the movie at all? Or we called him for Bipasha. Really? Yeah, it's a fact. Actually, he arrived late, but Bipasha gets so scared, so we thought he'll put that Kala Dhaga on her before the promo starts. But now that he's come late, Bipasha ka kya hoga, wo Bipasha hi jane.